Markets, organized by the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, in association with World Bank and IETA as knowledge partners. My name is Namrata Sehrawat, and it is indeed my honor to be your host for this prestigious conference. Today, we stand at a very critical juncture. Climate change is no longer a distant threat. It is here, it is real, and it demands for an urgent action. But while the challenge is immense, so is our opportunity to reshape our world into one that is sustainable, resilient, and equitable. The Bureau of Energy Efficiency, under the guidance of Ministry of Power and Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, has launched a transformative initiative of Indian carbon market to maintain low carbon economy. On a global scale, this effort is guided by the key framework of the Paris Agreement that builds upon the United Nations Framework Convention on Climate Change, that aims to reduce the greenhouse gas emissions and limit the global temperature rise. To meet the Sustainable Development Goals, we need to reduce the global carbon dioxide emission by 45% by the year 2030 from the levels of 2010 and reach the net zero emissions by 2050. So the time for incremental steps is over. It's time to take the bold and decisive action. That is why Prakriti 2025 is not just an event, it's a movement. The world needs to join hands, take responsibility, and accelerate solutions to combat climate change. We are indeed proud to host such a remarkable representation of both national and international delegation here. It's a true testament to the shared commitment across nations. So over the course of next 2 days of this conference, we will be delving into the mechanics of carbon markets. We'll explore the global best practices and discuss that how the innovative financial mechanisms drive climate action at scale. On that note, ladies and gentlemen, we are about to begin any moment from now, as we shall be having our honorable chief guest any moment. Well, currently, our honorable chief guest, Shri Manohar Lal, Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs, has arrived at the venue and is now being escorted along with the other dignitaries to the ministerial lounge, where he will have a brief social media engagement and share his thoughts on this incredible event. The chief guest will then take a moment to visit the Indian carbon market journey wall in the hallway, showcasing the tremendous progress we have made. It's a truly inspiring journey, and we are proud to share it with everyone here today. As they continue through the hallway, the Honorable Minister, along with the dignitaries, will stop by and take a commemorative picture with the Prakriti banner. It's a symbolic gesture representing the unity and strength of our shared mission for a sustainable future. So ladies and gentlemen, one more time, I would like to request, I can still see a lot of people standing at the back outside in the pre-function area. All of you are requested to please join us here and kindly put your mobile phones on the silent mode as we're about to begin any moment. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister will be arriving here any moment. I would request everybody, again, who are standing at the back, yes, please have a seat. I can see a lot of people are taking some really good pictures, and they've already started making some videos. So just in case if you're planning to post it online, please make sure that you use the hashtag Prakriti2025. Let the world know that you're present here, and you can share all the insights that are going to be shared here today on your social media.
But please use the hashtag Prakriti2025. May I humbly request all our guests who have just joined us to please have a seat as the Honorable Minister is about to arrive any moment. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest is now currently visiting the Indian Carbon Market Journey Wall in the hallway, and he shall be here any moment. May I request everybody to kindly keep the center pathway clear. We shall be expecting the Honorable Minister to take a commemorative picture at the Prakriti banner any moment from now, ladies and gentlemen. I hope we have already kept our mobile phones on the silent mode. If now, I would like to humbly urge you to please do so right away. It's a humble request one more time to everybody who is still standing at the back to please take their seats. I can see a lot of seats vacant over here on this side, just in case if you're looking for the vacant chairs. But please, everyone, occupy a seat. The chief guest is about to enter the hall any moment from now. Ladies and gentlemen, it is indeed an incredible opportunity to network with each other and also share our global practices with the world, since we have both the national as well as international delegation over here. So please make sure that in between the breaks, we take this opportunity to network and make some new friends. I hope you would be carrying your business card over here. Please make sure to pass it along. I can see a lot of people are on their mobile phones. May I request you to kindly keep it down now, as the Honorable Minister is just to arrive in next 10 seconds from now. Please, everybody, keep your mobile phones down.
The Honorable Minister is now about to arrive in the hallway. Ladies and gentlemen, we are now joined by the Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal, our Honorable Chief Guest for the day. A very, very warm welcome to you, sir. Along with the other dignitaries, Shri Akash Tripathi, Additional Secretary, Ministry of Power, Shri Dhira Srivastav, Chief Engineer, Energy Conservation, Ministry of Power, and Srimati Namita Prasad, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. I heartily welcome all the dignitaries on the dais. Welcome to you, sir. Aapka bahut bahut swagat hai. May I request all the dignitaries to please be seated at the dais. May I now request the Honorable Minister, along with the other dignitaries on the dais, to kindly proceed for the ceremonial lamp lighting. Ladies and gentlemen, lamp lighting holds a really crucial significance in our culture. It's a representation, it's a symbol of triumph, of knowledge over ignorance, of light over darkness, of positivity over negativity. So as we have lighted this lamp, we pray to the deity to bless us all with abundance of health, knowledge, and prosperity. May I now humbly request Shri Akash Tripathi, Additional Secretary, Ministry of Power, to welcome our Honorable Chief Guest, Shri Manohar Lal, Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs, by presenting him with a shawl. I would request Shri Dhira Srivastav, Chief Engineer, Energy Conservation, Ministry of Power, to welcome Shri Akash Tripathi, Additional Secretary, Ministry of Power, with a shawl. May I now invite Shri Dhira Srivastav, Chief Engineer, Energy Conservation, Ministry of Power, to kindly address the gathering with his words. Sir. Good morning. Honorable Minister of Power, Housing and Urban Affairs, sitting on the dais, Sri Akash Tripathi ji, Additional Secretary, Ministry of Power, Srimati Namita Prasad, Joint Secretary, Ministry of Environment and Forest. Distinguished guests, industry leaders, global experts, and esteemed delegates, a very good warm welcome to you all, and very good morning to everybody. Distinguished guests, it is my honor to welcome you all and extend a warm welcome to all of you in Prakriti 2025, an event that marks a defining moment in India's journey towards sustainable and energy-efficient future. It is an honor to welcome esteemed dignitaries whose vision and leadership
continue to drive India's energy and environmental policies towards a low carbon trajectory. Their presence here today signifies the commitment of the Government of India to advancing sustainability through progressive policies, innovation, and collaboration. As we gathered here today, we celebrate a major milestone, the launch of Indian carbon market. This initiative stands as a bold and strategic move in our efforts to mitigate the climate change while ensuring economic growth and energy security. A well-regulated and transparent carbon market will serve as a powerful tool to incentivize emission reduction, drive investment in clean energy, and encourage investment to the industries to transition towards a low-carbon pathway. It will not only strengthen India's commitment to net zero targets, but also position our nation as a global leader in carbon financing and sustainable development. At the heart of this transition, the Bureau of Energy Efficiency is playing a very crucial role. Since its inception, the Energy Conservation Act of 2001, BE has spread its effort to cover all sectors of economy, be it coal, be it petroleum, be it other energy sources. The energy efficiency has been built in, and we have achieved a lot of improvement in the energy sector. We last year saved around 53.6 million tons of oil equivalent. The energy we saved. Now we are moving towards the emission saving. So BE's role will be there in the carbon market. BE will be the administrator in the carbon market. The journey will continue. I urge all stakeholders, government agencies, industry, financial institutions, research organizations to come together in strengthening the Indian carbon market. Collaboration, innovation, and data-driven policy will be the key to making this journey a success. The responsibility to shape a more energy efficient and climate resilient future rests with each of us, and I am confident that the discussions and deliberations here today will provide a strong foundation for the road ahead. I once again welcome you all to the Prakriti 2025 International Conference, two-day international conference, and look forward to insightful discussion that will shape the next phase of India's journey and the carbon market. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. May I now invite Shri Akash Tripathi, Additional Secretary, Ministry of Power, to share his insights with the gathering. Sir. Our chief guest, Honorable Minister of Power, Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal ji, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. On our way here, we were just going through a Prakriti wall. I think you must have all seen that. That really shows the concern we have now for the climate change and how to mitigate the risks associated with the climate change. There have been significant developments over the years. There have been Kyoto Protocol, there was Paris Agreement, and subsequent COPs in which we are making our goals more stringent, more ambitious. India has also taken various steps. We have been trying to improve our energy efficiency. We are trying to conserve energy. We are trying to go for energy transition. And some accounts we have done exceedingly well, especially I would say on the energy transition. You must all be aware that we are moving much ahead of our target of having non-fossil fuel installed capacity. We had determined that we'll go for 50% by 2030, and we are about to achieve that target very, very soon.
Energy Conservation Act came, and subsequently we have initiated many measures to improve the energy efficiency. Some of the important initiatives have been the standard and labeling program. We all know that the star labeling of various appliances, and it not only educate our consumers and determine their choices also towards the higher energy efficient appliances, and it has given significant reductions in carbon emissions. We have come with the building codes for energy conservations. We are currently implementing those codes, and that they will also pave the way for conserving, have energy conservant buildings and energy efficient buildings. Also, in 2012, we launched our PAT, the Perform, Achieve and Trade scheme, in which we have covered the crucial sectors which are responsible for carbon emissions. And we have, through subsequent cycles of PAT, we have really achieved energy emission reduction targets. Now, over and above that, a significant milestone which we are going to achieve is now the Indian carbon market. You are all aware that we notified CCTS, that is Carbon Credit Trading Scheme, in 2023. We decided that for the compliance mechanism, because in the carbon market we have a compliance mechanism and there is a voluntary mechanism. In compliance mechanism, we had decided that we'll, in the first stage, we'll take 9 hard-to-abate sectors. And we are working on those sectors. We have been mapping, we have been auditing those sectors, we have been interacting with the stakeholders. And I'm happy to share that very soon we should be in a position to notify their targets for emissions in coming years. Once we notify those targets, and since other mechanisms, the other necessary mechanisms which we need to implement for launching the carbon market are already going on in parallel, we are targeting that by 2026, we should be in a position to actually start trading. Honorable Minister has just given us target that we should not wait till 2026 and we should try to launch it as soon as possible. So I assure him that we'll work on that and we'll try to do it as soon as possible. On the voluntary mechanism side also, we are taking various methodologies, and we are basically taking some guidance from the CDM mechanism which was implemented subsequent to 2005 Kyoto Protocol. And we'll very soon notify those voluntary mechanisms also. So both buyers and sellers would be ready. While notifying this target, we are conscious of the fact that we need to look at the marginal abatement cost also. It should not be totally unviable. We need to be very pragmatic while we are setting those targets. That's why we are interacting with our stakeholders. Those stakeholders and those industries are also at various levels of evolution. Some are very efficient, some have already migrated to renewable energies, and they are already beyond the targets which we are going to set. So they have no problem in achieving those targets. But there are industries who are already, who are so far on primitive technologies, they have not migrated to renewable energies, and they'll have to have significant investment to achieve the targets we are going to set. So we have tried to adopt an incremental approach so that by 2027, they achieve 40% of their targets, and the remaining 2 years, by 2030, they'll be able to achieve the rest 60% of it. So we are trying to stagger those targets so that they can conveniently achieve that. So while implementing this Indian carbon market, we have certain challenges also. Since it's in a nascent stage, we need to develop all the mechanisms. Our market needs to be efficient. Our regulation needs to be tight. Our monitoring of targets should be tight. We should be able to sufficiently incentivize industries so that by achieving targets, they are achieving energy efficiency also, and thereby reducing their cost.
So as I earlier mentioned, that marginal and abatement cost should be a critical parameter through which we are setting the targets. The integration with global markets would be another challenge, because there are some global markets which are much evolved, like EU market, UK markets and other markets. We need to integrate with those markets also. So that would also pose a challenge. We are confident that the way we are approaching to the problem, we should be able to mitigate all those risks and challenges. And as I mentioned earlier, the 26 is the upper limit. We'll try to start trading as soon as possible. That's a commitment. And this conference, we feel that will give us a roadmap, will give us insights into how we should go for the compliance mechanism, the voluntary mechanism, the integration of markets with the global markets, how to efficiently do the registry work, how to efficiently regulate the market, how to control the price volatility in the markets. So we have high hopes with this conference. I wish that we have very productive discussions and everybody contributes and we get a really good strategy coming out of this conference once we close this conference tomorrow evening. My best wishes. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing your valuable insights with all of us. Ladies and gentlemen, we will now have the opportunity to hear from our honorable chief guest, our visionary leader, Shri Manohar Lal, Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs. Sir, may I request you to kindly address the gathering. सबको मौका दो भाई, पीछे वालों को भी मौका दे दो। आज के इस अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स बहुत ही सारगर्भित, समय अनुकूल ये विषय और आप लोगों की उपस्थिति, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडिशनल सेक्रेटरी श्री आकाश त्रिपाठी जी, चीफ इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री धीरज श्रीवास्तव जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मैडम नमिता प्रसाद जी, डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो विषय जिस शीर्षक के नाते से हम इसको कर रहे हैं, प्रकृति 2025, जो विषय है और जो शीर्षक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सारगर्भित है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य सुख की कामना करता है और मनुष्य के सुख की कामना को पूरा करने के लिए देश और दुनिया में बहुत से विकास के काम किए जाते हैं और विकास के काम जब तक सामान्य उपलब्ध मानव शक्ति और संसाधन उनसे पूरे होते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जब ये मानव संसाधन और जो रिसोर्सेज जिसको कहना चाहिए वो प्रकृति का दोहन करना शुरू करते हैं तो वहाँ थोड़ी चिंता शुरू होती है। जब हमने इसके लिए अत्यधिक उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का करना शुरू किया तो उन संसाधनों का शोषण होना शुरू हुआ, चाहे वो पानी है, चाहे वो पृथ्वी है, पहाड़ है, वनस्पति है, आकाश है, वायु है। इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए चिंता हुई कि प्राकृतिक साधनों से जितना हम ज़्यादा सावधानीपूर्वक अगर नहीं बरतेंगे तो असंतुलन हो जाएगा। और इसकी चिंता देश ही नहीं दुनिया के लोगों को पिछली सेंचुरी के दूसरे उत्तरार्ध में
यानी उत्तरार्ध में ये महसूस हुई। 1980s में दुनिया में बहुत से ऐसे सम्मेलन होने लगे कि जब यहाँ कार्बन का उत्सर्जन ये बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, प्रदूषण होने लगा, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। उसी में 1987, 2005, 2015 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ। वहाँ से लोगों को यानी देश के सब देशों को अपने अपने टारगेट्स तय करने के लिए NDCs इसका जो एक प्रचलन हुआ कि हम कितना कार्बन कम कर सकते हैं, इसका उत्सर्जन कम कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स बनाए गए और उन पैरामीटर्स को बना करके उसके अनुसार हम सब चलें, क्योंकि सब वॉलंटरी है, सबको अपना योगदान करना है। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, जो अपने आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। थ्योरी आई कि नेट ज़ीरो एमिशन हम कब तक कर लेंगे। सब देशों ने अपना अपना एक टारगेट तय किए। USA ने टारगेट तय किया कि हम नेट ज़ीरो 2050 तक हो जाएंगे। भारत ने तय किया कि हम नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक अचीव करेंगे। तो ये सब करने के लिए सबको अपना अपना मैकेनिज़्म ये सबको बनाना है। देखा जाए तो ये जो पर्यावरण संरक्षण है ये अपने देश के लोगों के लिए नई नहीं है। पर्यावरण संरक्षण तो सदियों से हमारी संस्कृति का ये अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारे परिवारों के लोग भी उस समय इसमें सामंजस्य ये बैठाते थे। हमारे जो महाकाव्य हमारा साहित्य है उसको भी हम पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है भगीरथ द्वारा गंगा का अवतरण, अर्थात किस प्रकार से जल संरक्षण को महत्व को इसको दर्शाता है ये विषय। इसी प्रकार से श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा के द्वारा प्रकृति का कैसे संरक्षण करना है ये उसमें से ध्यान में आता है। ऐसे ही रामायण का अरण्य कांड ये वनों का संरक्षण उसकी पवित्रता इसको उजागर करता है। कितने ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार ये भी जल निकायों और जलीय जीवन के महत्व को दर्शाता है। तो ऐसे ही इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। महाभारत में खांडव वन दहन की घटना, ये घटना ऐसी है कि जो अंधाधुंध जैसे हम विनाश के दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में ये बताता है। ऐसी कितनी कथाएं हमारे संस्कृति में जुड़ी हुई हैं। सामान्य जीवन में हम देखते हैं आज भले वो प्रचलन हुआ कम हुआ होगा, लेकिन परिवार में सदस्य अपने घर में तुलसी लगाना, पीपल की पूजा करना, क्योंकि पीपल और तुलसी ऐसा माना जाता है ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। न केवल दिन में, रात में भी करते हैं। कोई पेड़ कम ही होते हैं जो रात में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करें, दिन में करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। लेकिन ये दोनों पेड़ ऐसे और भी ऐसे बहुत वनस्पति हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र ये प्रकृति का चक्र है। तो इस प्रकृति के चक्र को जैसे हमने उसका संतुलन बिगाड़ना शुरू किया और विकास के नाते से कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होना शुरू हुआ तो इम्बैलेंस हो गया और खतरे पैदा हो गए तरह तरह के। अगर उसमें हम लेटेस्ट बिल्कुल नवीनतम खतरा हमने पीछे देखा, कोविड का खतरा। अब इस कोविड के खतरे में ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं दुनिया विनाश ना हो जाए। कितनी चिंता हो गई। ऑक्सीजन इसको कैसे बढ़ाया जाए, प्राकृतिक साधनों से, कृत्रिम साधनों से खूब ऑक्सीजन पैदा की, लोगों को ऑक्सीजन, फिर वैक्सीन्स। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के साइंटिस्ट को कहा कि ऐसी वैक्सीन तैयार करो जो दुनिया के लोगों के काम आ सके, जिसमें से हम इस वायरस को समाप्त कर सकें। न केवल भारतवर्ष बल्कि दुनिया के 100 देशों को हमने उन वैक्सीन के माध्यम से और वायरस से छुटकारा देने में, यानी कोविड से छुटकारा देने में उन्हें सहायता की है। तो मित्रों ये काम लगातार चलने वाला है। अब हम दुनिया में आज का ये जो प्रदूषण है ये हमारी चिंता का विषय है। इसको कैसे ठीक करना है, कैसे इसको घटाना है, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसा अभी बताया गया कि दुनिया में
हम लोगों की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हमारी एक अर्थव्यवस्था है। हम देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था उसी प्रकार से बढ़ रही है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसके लिए, विकास के लिए हमको डेवलपमेंट, हमको उत्पादन, हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसमें पावर का अपना एक योगदान है। हमारा जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री। अब जब पावर प्रोड्यूशन करना है तो जो परंपरागत हमारी थर्मल पावर है उसकी बजाय हमको आरी की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसके हमने टारगेट तय किए हैं। हमारा 2030 तक हमने तय किया कि जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को हम 45% कम करेंगे और 2030 तक आरी 500 गीगावाट आरी का हम जनरेशन करेंगे। हम आरी की स्पीड अपनी बढ़ा रहे हैं ताकि थर्मल से हम थोड़ा सा बच सकें। तो इस प्रकार हम कार्बन को कैसे, इसके उत्सर्जन को कम किया जाए, तरह तरह के कंपटीशंस और इसको आर्थिक संसाधनों से जोड़ने के लिए आज जो इस युग में परिवर्तन हुआ है उसी में से विषय निकला है इंडियन कार्बन मार्केट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से इंडिया की एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट को लीड किया है। हम एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत अपना परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी इन एफर्ट्स को अगर देखा जाए तो BEE के परफॉर्म, अचीव और ट्रेड प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें बहुत प्रगति की है। अंडर पैट स्कीम एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए रिडक्शन टारगेट सेट किए हैं और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेड करने की सुविधा ये दी गई है। इससे न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव एमिशन रिडक्शन संभव हुए बल्कि इंडस्ट्रीज को क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए भी इंसेंटिवाइज ये किया जा रहा है। दिस वाज ए सक्सेसफुल मार्केट बेस्ड अप्रोच। सो फार 8 cycles of PAT have been initiated since 2012, covering 1333 units from 13 sectors. 13 सेक्टर से हमने 1333 ऐसे जो इनिशिएटिव जो हैं वो हमने लिए हैं। इस जर्नी का अगला जो मेजर माइलस्टोन है वो जैसा हम अभी विचार कर रहे हैं वो है इंडियन कार्बन मार्केट। इंडियन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम 2023 के तहत इसको हमने लॉन्च किया है और इसकी इंडिया की सस्टेनेबल ग्रोथ की कमिटमेंट को और आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। इंडिया कार्बन मार्केट की स्थापना का एक महत्वपूर्ण ये कदम है। उद्योगों और व्यवसायों, नवचारकों को उत्सर्जन कम करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश करने और ग्रीन इकोनॉमी में योगदान देने के लिए ये प्रेरित करेगा। ये याद रखना होगा कि केवल इकोनॉमिक टूल नहीं है। कई बार हम इसको मान लेते हैं कि आर्थिक की दृष्टि से इकोनॉमिक टूल के नाते से इंडियन कार्बन मार्केट काम करेगा, बल्कि ये हमारी एनवायरमेंटल कमिटमेंट उसको दर्शाता है। इसे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का साधन ये नहीं मानना चाहिए। लेट मी हाईलाइट हियर दैट टू अचीव द डिजायरेबल आउटकम्स हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करनी होगी ताकि कार्बन क्रेडिट रियल, वेरिफिएबल और फ्रॉड प्रूफ हों। नया मार्केट है, कभी कभी खतरे भी होते हैं, तो इन खतरों से बचने के लिए भी हमको मैकेनिज्म ये अपने बनाने होंगे। सैटेलाइट ट्रैकिंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्सर्जन कटौती ऑथेंटिक और मेजरेबल हो। केवल डिक्लेरेशन न हो, इट शुड बी मेजरेबल। कैप एंड ट्रेड सिस्टम को डिक्लाइनिंग कैप के साथ लागू करना होगा ताकि समय के साथ एमिशन रिडक्शंस सुनिश्चित की जा सकें। साथ ही ग्लोबल कार्बन मार्केट्स में जुड़कर ट्रांसपेरेंसी और बेनिफिट्स को और बढ़ाया जा सकता है और अधिक इंडस्ट्रीज, कंट्रीज और कॉरपोरेशंस की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा, जिसकी वजह से मार्केट लिक्विडिटी और एफिशिएंसी ये बढ़ेगी। EU, ETS और कैलिफोर्निया ETS जैसे कार्बन मार्केट्स को आपस में जोड़कर मूल्य स्थिरता और मूल्य निर्धारण को और मजबूत करना होगा। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम एक रोबस्ट, क्रेडिबल और इफेक्टिव कार्बन मार्केट बना सकते हैं जो वास्तव में सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देगा। मित्रों, एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट,
एंड क्लाइमेट चेंज एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिन्होंने एक स्ट्रक्चरल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क विकसित करने में अथक प्रयास किया है। इंडियन कार्बन मार्केट केवल एक नीतिगत पहल नहीं है, बल्कि ये एक ग्रीन और सस्टेनेबल इकोनॉमी की दिशा में परिवर्तनकारी कदम है। ये दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, कंप्लायंस मैकेनिज्म और ऑफसेट मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म बड़े एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए जीएचजी इंडस्ट्री रिडक्शन को अनिवार्य बनाता है, जिससे वे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के माध्यम से अपने एमिशन टारगेट्स को पूरा कर सके। इसी प्रकार ऑफसेट मैकेनिज्म कृषि, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन जैसे क्षेत्रों को वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का अवसर देता है, जिससे वे कार्बन ट्रेडिंग का लाभ उठा सकते हैं। एज ऑफ नाउ इंडियन कार्बन मार्केट के कंप्लायंस मैकेनिज्म में 9 सेक्टर शामिल किए गए हैं, जबकि ऑफसेट मैकेनिज्म के तहत विभिन्न कई विधियों पर विचार किया जा रहा है। इंडियन कार्बन मार्केट पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत के एनडीसीज के अनुरूप है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के नेतृत्व में काम करते हैं, नेतृत्व हम करते रहेंगे। अगर मैं इस सार रूप में कहूँ तो भारत सस्टेनेबल ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इंडियन कार्बन मार्केट के माध्यम से हम एक रेसिलिएंट, ट्रांसपेरेंट और इम्पैक्टफुल सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस और ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट के अनुरूप हो। आइए हम सब मिलकर इंडियन कार्बन मार्केट को एक ग्लोबल मॉडल बनाएं, एक ऐसा बाजार जो न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करे, बल्कि हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ ग्रह भी सुनिश्चित करे। आई विश यू ऑल ए सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। आई होप Prakriti 2025 proves to be a key platform for learning, sharing knowledge, and exploring opportunities for collaboration in our collective global effort to combat climate change. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने बहुमूल्य विचारों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की मौजूदगी मात्र हमें हर्ष और उल्लास से भर देती है। सर, आपके कार्बन मार्केट को शीघ्र ही भारत में लॉन्च करने के निर्देशन ने हम सभी को और भी ज़्यादा उत्साहित कर दिया है। हम यही आशा करते हैं कि भारत शीघ्र ही इस मुकाम को हासिल करे और इंडियन कार्बन मार्केट को एक ग्लोबल मॉडल बनाए। With that, I would now like to invite on stage Mr. Saurabh Didi, Director, Bureau of Energy Efficiency, to deliver the vote of thanks. Thank you. Honorable Minister of Power, Additional Secretary, Ministry of Power, Joint Secretary, MOEFCC, Chief Engineer, Ministry of Power. It is my privilege to extend my deepest gratitude to all on the dais. At the outset, I express my sincere gratitude to the Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs. Sir, your words like banyan tree or tulsi, that basil, is actually phenomenal, that these trees are actually giving a lot of oxygen to the world. Also, you said that strong governance and transparency is required. We ensure you, sir, that our carbon market is actually establishing transparency complete. We had 15 stakeholder consultations where we called people, and more than 200 people participated in that. Also, we ensure you that we are using blockchain technology for our registry, which will actually ensure that it is a very stringent governance system. I also extend my heartfelt thank you to Additional Secretary, Ministry of Power, for outlining the crucial link between energy efficiency and the carbon market development. Sir, your insights today reinforce the need for structured, market-driven approach to emission reduction. Also, I give my regards and gratitude to Joint Secretary, Ministry of Environment. Their support in development of regulatory framework is essential. They actually helped us in development of these notifications and also target establishment. Also, my thanks to Chief Engineer, Ministry of Power, who actually helped us in the technical advancement and regulatory mechanism that facilitated seamless transition towards a low carbon economy.
Sir, we had more than 1,500 registrations for this event, but due to the venue size, we were not able to accommodate, so a lot of people have joined online as well. So regret to all those people who have not joined, but thank you to all the people who have actually joined here. Also, sir, a lot of efforts went from my bureau's team, like Ashok ji, Mandeep, Meenakshi, who actually supported in organizing this, PricewaterhouseCoopers, who actually gave us technical expertise, Rajiv, Ralhan, Tushar, Pankaj, Sudan, Anjan, all those people actually helped us. iForest also helped us in development of all the infrastructure, all the collection of data and all those things. Then World Bank and IATA are actually knowledge partners, so I give thanks to all these people. So I look forward, sir, today for engaging discussions as you directed. Once again, I thanks and extend my heartfelt thanks to each of you for your presence, insight, and commitment. Your participation is driving force in shaping our India's sustainable future. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, sir. With that, I would again like to thank our Honorable Chief Guest, Shri Manohar Lal, Honorable Minister of Power and Housing and Urban Affairs, our dignitaries, Shri Akash Tripathi, Additional Secretary, Ministry of Power, Shri Dheeraj Srivastava, Chief Engineer, Energy Conservation, Ministry of Power, and Srimati Namita Prasad, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Thank you for gracing this occasion and inspiring all of us with your valuable thoughts and showing us the way ahead. Thank you. Thank you so much once again for marking this event with your glorious presence. On that note, ladies and gentlemen, we will be taking a short break for the next 10 minutes, post which we will resume with our first knowledge session. Please make sure that you're here back on time in next 10 minutes. Thank you.